नाइस नाइस। किसने गाया ये? ये Busta Rhymes. Look at me now. फक, मैंने नहीं सुना। It's very old actually. ये high school के time का है. This is from when you were in school, man. मैं इसका एक ही सुना था, वो भी रीमिक्स था किसी का। Busta Rhymes का remix. हाँ, किसी ने इसका किया था। Busta Rhymes is known for this fast fucking insane flow, you know. So it's very fun to cut to that. इसने ही स्टार्ट किया था क्या? It's a start का flow थोड़ा ना कोई start करता है bro. मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ था ये? कब? I don't fucking know. Yeah, I don't know. I don't know when this started. You know, this kind of fucking तू तो ऐसे बचपन से सुन रहा है ना हिप हॉप? hip hop. Yes, correct. फोर्थ फिफ्थ से या उससे पहले से भी? Maybe, yeah. Eminem, dude. Eminem, yes, yeah. Eminem and even Linkin Park. You know, Linkin Park had some rap and shit. So that was like. So what तुम else? देखा लिंकिन पार्क फिर से परफॉर्म कर रहे हैं? But कौन क्या? The fucking Chester is dead, man. What the fuck? हाँ, What are you gonna do? Mike Shinoda is rapping still. आई गेस मैं लाइक बस देखा था उनका एक वीडियो, अच्छा. मतलब प्ले करके ही देखा है, बस वीडियो Yeah, था। and you know what it is like whenever I see these old bands who've lost some key members touring, and then people still go for them, and I'm just like, it's not I don't know what you're trying to get. Like, I would not go to a Slipknot concert now. What people do, you know, Joey Jordison is out. What the fuck? I can't do it. I mean, I can't do it, but I think some people still enjoy it. You know. बट व्हाट इफ मेंबर्स चेंज हो गए हो Members change हो गए हैं. बैंड के, तो फिर जाएगा? Members change हो गए हैं, but in the sense कि they're not out. Yeah, लाइक well, लैम्ब ऑफ गॉड अभी। right. Well, I don't know. Yeah, I'll cross that bridge when I come to it. You know, when the opportunity presents itself, we'll take a call where we land. You know, which side of the argument. पॉक्यूपाइन ट्री सुना तूने? PT सुना है, yes. नई एल्बम? नई album नहीं सुनी. No. हाँ, मैंने भी नहीं I सुनी। haven't heard PT in a long time. काफी लंबा गैप था इंसिडेंट के बाद। मेरे लिए तो वो भी नहीं, like I just stopped listening to PT as a band, even like old records. I mean, end of when I went to school, because no one listened to progressive rock in New York. No one did. You know, no one, dude. I mean, no one that I knew, at least. Yeah. न्यूयॉर्क का सीन क्या है लाइक म्यूजिक में? मेनली हिप हॉप? ऐसा कुछ नहीं है, नहीं. जैज तो 100% जैज Hip hop, pop, yeah, everything. You find everything, but I also like that was a very visual arts heavy, you know, time for me. So, well, you know, of course, I went to the Village Vanguard, which is a classic. It's an iconic. So it's by the way, it's you pay you get a ticket, and you also have to buy one drink minimum, and there's drinks only. You don't get food, so you just yeah. It's a really dude. That's an icon. All the icons have performed there. Miles Davis. You know, all the other ones. Coltrane. I don't know if it was around with Nat King Cole, because Nat King Cole is pretty old. But this is, I think, a 70s joint. So, you know, Miles Davis has been there. What's his face? Eastern Rebellion, they performed there. बीबी किंग ने भी किया होगा? BB King, mayhaps. Perchance. That is the case. Let's see. Let's ask ChatGPT. We'll have to do this on the podcast. We just open ChatGPT and make her talk. Listen, we have a fourth mic. Can you list all the iconic jazz musicians or jazz acts that have performed at the Village Vanguard in New York City? बीबी तो नहीं आएगा जैज में। Jazz में नहीं आएगा. BB is blues. हाँ, blues. BB is blues. Well, I don't know then. The Village Vanguard, a legendary jazz club in New York City, has hosted countless iconic jazz musicians over the decades. Some of the most notable acts that have performed there include 1. John Coltrane. His 1961 performances were recorded for the famous live album Live at the Village Vanguard. Till Evans. He recorded multiple albums at the club, including Sunday at the Village Vanguard. 3. Thelonious Monk. Monk had several legendary performances at the Vanguard in the 1950s and 1960s. Fuck, Oh, 50s, so it is old, yes. Rollins has been a regular performer at the Vanguard, and he recorded A Night at the Village Vanguard in 1957. 5. Miles Davis. Although more closely associated with other venues, Davis and his groups played several notable sets at the Vanguard. 6. Charles Mingus. His powerful performances at the Vanguard are remembered for their intensity and creativity. 7. Listen, we're not professionals Art around Blakey here. and the Jazz Messengers. We're going to be clunky. Blakey and his groups
played frequently at the Vanguard. चल सही है वो समझ में आ अच्छा गया समझ आ गया ठीक है हाँ, we got it it's a historical club हाँ it was really cool but I'll tell you what yeah so I went when I went to college so I used to listen as I left school we used to listen to a lot of psychedelic music we used to listen to a lot of trance कोई नहीं सुनता था bro डायमंड वन में तो लोगों ने आई थिंक संग से नशे ही नहीं करे थे बचपन में तो उनको पता नहीं था कि सुनना तो yeah पर so, अमेरिका का है काफी डिफरेंट यार कल्चर See, of course, yeah. But I really got into like a lot of classic rock. Yeah, when I was there, Creedence Clearwater and like Rolling Stones and yeah, because my friends. सैफ भी We used सुनता है to ना do, वही like, a lot of काफी क्लासिक रॉक Classic rock is nice, yeah. I don't know if you listen to a lot of it, but maybe. नहीं बूम Yeah, buddy, you're on the podcast actually, but not in person for a change, huh? Fucker, you're late. What do you think? I'm late? Ah, sorry, I was rehearsing. Yeah. Okay. Yeah, well, you're on the pod. We've been recording. So, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आ गया Ishtu Chandra हाँ Vidyasagar वो आ चुके हैं. बॉन्डर आज नहीं है बढ़िया Introducing, welcome ladies and gentlemen. This is Ishwar. हाय हाय Ishwar गाइस dick shit. He's got a lot of. He's got shit on his dick. It's a patrilineal line of people who have shit on their dicks. They're called dick shits. That's Yes, I believe नीड टू अर्न इट उन, ब्रो उनका गोत्रा है dick shit है ना गोत्रा बोलते हैं ना इस चीज हाँ गोत्र पोतरा हो या पोतरा हो किसको फर्क पड़ता है? को जो भी है लंड पे तो भाई हक दिया ना किसी ने हग लड़ somebody fucking hack yeah It's well in any the clan case of so the where the shield. fuck are you loser motherfucker The clan of the Asshole. Sheilas. hey buddy you give me a time you said 6 to 6:30 6:20 I recorded this I started I'm done I'm waiting for you bitch हाँ तो you didn't wait. where are you I am yeah in the wind. in the way he's not even left bye वेरी Yeah. अनप्रोफेशनल ब्रो yeah well nobody ever accused him of being professional actually nobody ever yeah but so my influences changed a little bit like at least what I was surrounded by in terms of music but then I really got into classical later 2018 क्या वेस्टर्न क्लासिक Western classical initially and then Indian classical also. But Western classical was the gateway drug. Because I was like, wow, music can have soul so much. Wow. वाह भैया अरे मेरे को तो लगा कि सर बबले और गांडे हिला हर रहे चीज में वन अप नहीं है हैं हाँ हर चीज में भाई कोई पार्टी कर रहा है कोई नशे कर रहा है कोई किसी ने ये कर कोई किसी ने उसकी मैंने इतने लोग मारे अरे भाई यार कुछ ईगो ट्रिप what the fuck I'm like damn bro yeah music can awaken your chakras I didn't know that until I chakra chakra my root yeah चक्रे चक्र चक्रे को लेके क्या ये चक्रों का सिस्टम का कुछ पता है कोई नॉलेज है इसके बारे में एक तो थोड़ा पढ़ा था बट Okay, ज्यादा yeah. कुछ नहीं तुम्हें लाइक बेसिकली सबसे जो लोअर है उससे अपना सर से रिलीज कराना होता है कुंडलिनी को कुंडलिनी होगा अच्छा oh but you can really अच्छा okay लाइक उस वे में जो वो बोल रहे हैं कुंडलिनी को so अवेकन the करो फिर chakra हाँ the chakra is a physical thing that with exercise you can release is it एक्सरसाइज is it an organ ब्रो tell me something what the hell is kundalini yoga बेसिकली कुंडलिनी वाइटल स्पिरिट टाइप कोई चीज है हमारी बॉडी में और लाइक डोमेंट होती है तो तुम्हें लाइक मेडिटेशन वगैरह करके उसे लाइक अवेकन करना होता है और 1 by 1 लाइक 7 चक्रा से उसे ऊपर लाना होता है और आई गेस ऐसा कुछ सीन है साले तू ब्राह्मण तो पेल रहा है ना जो तेरे को नॉलेज पड़ी है हैं? कोई कुछ खास नॉलेज नहीं हो खास ये भी मैं ढंग से नहीं बता पा रहा हूँ बाय द वे हाँ उच्च कोटि के ब्राह्मण आए हैं आज हमारे पॉडकास्ट में तो कुंडलिनी योगा सिखा रहे हैं हमें पैर धो के पानी पियो भाई मैं ऐसे पी लेता हूँ बोतल से साले पुण्य होगा सॉरी पुण्य मिलेगा तुम्हें पुण्य मिलेगा damn dude yeah what the fuck are we talking about म्यूजिक विलेज yeah एट village vanguard रॉबर्ट ग्लासमैन ने प्ले किया था यार वहाँ पे क्रिस डैडी डेव आई गेस वो ट्रियो था काफी सही परफॉर्मेंस थी उनकी I'm not familiar with this act actually his music काफी सही है Hmm. ग्लासपर काफी सही है क्रिस डैडी डेव भी बहुत सही है Daddy Dave भी मेरे को नहीं पता देखिए I love Bernie Bernie सैंडर्स नहीं what's his face Birdie क्या है Bird what's his fucking name how am I blanking on his name bro Bernie's tune is the name of the song actually the fucking drummer dude How am I एंडरसन पार्क Anderson Park
एंडरसन पार्क की बात कर रहे हैं किसकी? नहीं। ड्रमो है ना? नहीं, the jazz fella. Hmm. Hold on, I'm just getting the name of the artist. Bernie's Tune is a jazz standard, actually. Okay, so I guess a lot of people have played it. What's the name? Bird, jazz. Herbie Hancock is also pretty cool, by the way. अभी हैंकॉक जिंदा है अभी भी? पता नहीं, मैं ना ऐसी चीजों का पता नहीं करता एक्चुअली. पता है क्या है कि बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छा ये इस आर्टिस्ट के ये इसके बारे में बात करता है, एंड देन लाइक फॉर एग्जांपल इफ इट्स अ बैंड, लाइक आई विल नॉट नो द नेम्स ऑफ द बैंड मेंबर्स. I'm just not that kind of guy, you know. Like I just never get into, like, if I like the music, I like the music, and then I'm done. I don't look beyond. But yes, Buddy Rich. Oh, Buddy fuck, Rich, हाँ. that fucking yeah. Birdie Rich. Birdie. I don't know what's calling it. Birdie. Birdland उसका गाना नहीं यार. Birdland, Buddy Rich. सुना नहीं. तूने सुना है पक्का? मैंने बड़ी रिच नहीं सुना. वो फक हाँ ये सुना है हाँ. Of course you पर heard Birdland. ये एक्चुअली वेदर रिपोर्ट का नहीं है, इसने कवर किया है या ओरिजिनल है इसका? So this must be that's what even Bernie's Tune is a jazz standard. I think a lot of these guys, you know, My Funny Valentine, these are just jazz standards that a lot of artists over the course of that they'll do their version of it. Because that's what jazz is like, analogous to, you know, classical in the sense everyone does their own version of a lot of like an established canon of music, ना? ऐसे ही होता है. क्लासिकल तो सेम होता है bro, exact. Classical same होता है exact, but इसमें भी तो I'm sure this is same, or maybe there's a variation, you know. Yeah. नहीं जितना को होता तो स्कोप नहीं है वहाँ पे चीज़ चेंज करने का. जैज में तो लाइक सब कुछ इम्प्रोवाइज है, बस लाइक बेसिक ट्यून सेम है और सारी सोलो वगैरह सब कुछ इम्प्रोवाइज होगा. Okay. Yeah, you tell me. You're the musician. Tell me. Tell me how that would work. वही होगा. हाँ. बेसिकली हर कोई अपना सोलो करेगा, जितने भी बैंड में लोग हैं एक Okay. एक करके. Got it. वही है बस टेम्पलेट. Okay. मेन मेलोडी बजाओ फिर सोलो करो. John फिर से Coltrane बजाओ. famously, you probably heard giant steps. क्या गांड मारी उसने अपने pianist की, हाँ? क्या गांड मारी है bro? Could do it. He's so clunky, and his poor guy. Just, you know, how will you follow that? What is it called? Like he's going, हाँ, he's skipping the wrong notes, ना? सर्कल ऑफ फिफ्थ्स है मेरे ख्याल से Circle of उसमें fifths होता है, but वो which is circle of क्या होना चाहिए? मुझे यार एग्जैक्टली याद नहीं है वो किस पे, पर मतलब हाँ मैंने प्ले करने की कोशिश की है. काफ़ी मुश्किल है वो. काफ़ी लाइक वो सारे 1-2 सेकंड में स्केल चेंजेस हो रहे हैं. बहुत मुश्किल है. इवन स्लो पे. Yeah. Slow पे मुश्किल, and then that's fucking it's a fast jazz, yeah. Guys, check it out. Giant Steps, John Coltrane. Yeah, too good. जॉनी बॉय. तू बता तू क्या बना रहा है आजकल? You're a musician. Techno. Style benders. If you like techno, if you like Style techno benders. acts in Delhi, Style Benders, they perform every other weekend at a bunch of clubs. Check out their socials. Check out their Spotify. Are you on Apple Music? Yes, you are. Yeah. Yes, you are. Yeah. Techno. So how's the techno scene in Delhi? तो ये बता. What's the sauce? सही है ब्रो. How are the parties? सही होती है. Okay. मतलब हमने अभी तक काफ़ी लिमिटेड लाइक क्लब्स में प्ले किया है. Playing it cool. Kai, you do Kai Room a lot. काय पे तो सही होता है, उनका लाइक साउंड काफ़ी सही है. Kai Room, yeah. Kai Room, you love the speakers. Why is that compared to other clubs? For example, the new Piano Man at El Deco is got shit music. I mean, the speakers in the sense, the music, the acts are great. But I'd gone for the Green Park show. Green Park is also a Delhi-based band. Yeah, they've got the subs on the ceiling or something. किसका? पियानो मैन एल डेको मैं सेंटर, गया नहीं हाँ होगा. वहाँ पे वो तो टेक्नो करते नहीं है, बट मेरे आई थिंक जो मेरे को किसी ने बोला था, मेरे को पता नहीं, अब देखिए आयुष हंडा ने बोला तो क्या भरोसा. लेकिन उसने कहा था कि उन्होंने छत पे सब डाल दिए. अब देखो छत पे सब डालने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बन सकता, ठीक है. बहुत हाँ वियर्ड होगा. That would be insane. सोच अगर उन्होंने एक्चुअली किया हो. But I think, well, that's what he was saying. Well, so who knows? No wonder साउंड अच्छी नहीं है. Guys, fellas, have you ever seen a subwoofer on the ceiling of something? There he is! The third mic. Yeah, well. और भाई क्या हाल चाल बाजी? Yeah. Finally, we can begin the episode. You're sitting on the cord, I believe. Can you up. just not do that? Just get up and fucking put it out. Don't fuck with my wrist. ये क्या placement है क्या? Do it yourself. You were not here. What am I supposed to fucking सब मुझे करना estimate पड़ता है. how you would sit, which posture, where you want the mic? What am I retarded? हाँ तूने कभी देखा नहीं मुझे बैठते हुए. नहीं मैंने नहीं देखा. फर्स्ट है सबका. Well,
It's season 2. Things have changed. It's season 2. Oh, I know the podcasters who have seasons. I mean, I don't know what's up with that. मैं तो कल पूरे रात सीजन 1 के भूत के साथ ही था. Season 1 के भूत के साथ? हाँ. सीजन 1 का भूत कौन है भाई? अपना चुसू? Oh, right. Yes. Yeah. Yeah. What was that? So you sent me a photo of 2 bags of milk, and were they limes? It looked like Karela, करेला एंड भिंडी. and they were bhindi. Yes. For what? हमने 6 डाइट कोक मंगाए थे और हमें ब्लिंकिट ऑर्डर ये मिला था. they just delivered this to us. I was surprised. I was like, "Achha, they must be cooking something up." I just couldn't, नहीं. bother to give a fuck about Not like. gonna let that heathen near my fucking stove. Thank you very much. Right. But Because the obvious dish that you would have made with bhindi and milk otherwise, huh? yeah, I guess. नहीं तो हमने And Karela. हमने डाइट कोक मंगाया था and this was about 11:45 and Blinkit 2 बंदे आए. There's like a 20-year-old guy and an 11-year-old kid who's standing at the door and he's holding the packet. He's hiding me the thing and he's like They ride in pairs these days. I guess. So they ride in pairs. One of the guys goes to the door. One of the guys rides the bike. और एक That's how they do it. 11 साल का छोटू गुलू मुलू सा बच्चा है वो पीछे खड़ा है. He's like लीजिए. I'm like दीजिए. Yes, we have. Yeah, we have what is it called? Minimum age for working. होता है ना कुछ? Is there a law? ना? We have the law. We have it. हाँ. We're safe. Our kids are safe. Minimum They're wage. not being employed in manual labor minimum wage नहीं. at the age of fucking 11. हाँ. They're not doing that. They're all being educated. Yeah, it's the new India. exactly. It's a fucking change. We're growing. Hello. Minimum wage. 8.4. I think Modi's done it, dude. Naya Bharat. Yeah, fuck the books. Drop out. Listen. Everyone in the US is raving about all these college dropouts. Drop out of school. Who the fuck said? Start early. Start early, man. Get ahead. You gotta get ahead to get ahead. You gotta get some head to get ahead. Is that what it is? I believe so. Okay, well, It's the entire foundation of the casting couch. you gotta deliver some bread to get ahead, I guess. क्या? In this case. Bread delivery guys. I said give some head to get ahead is the whole casting couch ethos. Oh, right. Right. You said something about delivering some bread. So I said you deliver some bread to get ahead, or yeah. so the bakers are doing it. It's them. Huh? So it's the bakers who've got it down, delivering some bread. Bakers नहीं यार, वो 11 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ. तेरा दिमाग कैसे चलता है? ऐसे ही चलता है. ब्रेड तो किसको डिलीवर नहीं हुआ, भिंडी के लिए. Yeah. So what else? Yeah, what the fuck? Yeah, you demolished a bottle of vodka, huh? That's his bottle, whatever that he left. हाँ. He said कि मैं पैसा वसूल करने आया. I mean, I don't know what that it's just the means. concept, I just don't get it. Yeah. It's just he's so alien to me. नहीं. He just showed up to we chilled. Sure. No, of course. Yeah. Good. 6:30 बजे गया सुबह. Amazing. Fantastic. कौन? Rivshu. Oh. Yes. उस दिन? नहीं. कल रात. आज सुबह. Monday. यार Monday night थी यार. You gotta turn up. What Listen, the what the fuck is? bro? He kept telling me मैं जल्दी जाऊंगा, मेरा काम है कल, मैं जल्दी जाऊंगा, मेरा काम है कल. Yeah. Listen, we're all properly employed. मैं and, सो रहा हूँ जा. we have responsibilities and we're productive elements in society. And it's a Monday night. Are you not supposed to turn up? The weekend, yeah. फिर एक point पे. When does the weekend? I'm actually lost on the concept. Listen. And I start falling asleep at some point, and he's not like, "Yeah, let me take this as my cue." He's like, "Ut sale," and he's like waking me up and chal. And I did fucking 5 jumping jacks and whatever. I got like all actor, whatever. 2 घंटा और बैठा. Wow. Yeah, you don't need cocaine anymore. Yeah. Whoever did. Right. Anymore was Well, I mean, we weren't around in the 80s when they were putting in the Coca-Cola, were we? no. No. But our parents were, I guess. I And so guess. hence why we have Maybe a we can- hereditary predisposition Maybe to feel stimulated in the right. Listen. I guess we can ask them what it was like. No, and listen. I haven't been to the Alps either. If they ever break you, इतने बारे PPC के बारे में भी कहते थे. Huh? PPC के बारे में भी. PPC के बारे में क्या कह रहे थे? कि वो like कोक मिला के देते हैं चीजों में. क्या बात कर कर रहे रहे हो? हैं? ऐसा बकवास है. Stupid thing. ये हाँ, ना 100%, exactly. हाँ. Yes, some loser started this PPC rumor. जो तुम्हें तो 2 रुपए का चीज नहीं दे रहे वो तुम्हें कोकेन मिला के दे रहा क्या- है. हाँ, बहुत बढ़िया. Yeah. We were just happy with anything. This fucking crappy pan corner at the end of the bus lane outside school was the place to hang out after school. Prince Pan. PPC Arkipuram guys, we're all from DPS Arkipuram. So yeah, we're all dipshits. Yeah. As I say, aren't they called dipshite? Yeah, we're from PPC. We're from PPC Arkipuram. We're all a bunch of big shites. Yeah. Yeah.
Best school ever. Dick shits. Dipshits. Yeah. Dipshites. Listen, I did the joke. Shut up. मैंने कर दिया है. तू Hello late and welcome to the beginning of the podcast. Now that I've showed up, how is everybody? Welcome to Improper. I'm gonna cut that out. Dude. That was so bad. That was pretty bad. बहुत नहीं तो gold हम churn out कर रहे हैं ना बाकी सब कुछ. Correct. ये तू कटा. Correct. Absolutely. Until you showed up, it was all gold. Now the conversation has wandered into unknown and boring territory. People have tuned out. People dropped out the moment you showed up. Okay. And I do have the effect of dropping out. yeah. You तो don't snicker. Listen. No, I'm advocating for children to do it. I think, yeah. That Absolutely. is turned, yeah. Much better than adults doing What it. the next Peter Thiel is not going to fucking go to college and drop out. Okay, they're just nursery. They're done. Boo boo gaga. They're gonna just boo boo gaga their way to the top. Trust me. Peter Thiel का क्या scene exactly? Peter Thiel is the PayPal mafia, no? Originally, PayPal mafia made a bunch of money, started his VC, and he invested in what's his face? Facebook, initially one of the few angel investors, I think a $500,000 investment. And he works with the state a fair bit. Uski Palantir. Palantir तेरे को पता है? Ukraine वो. नहीं, Palantir is this tech startup that basically gets all of their basically it's referencing Palantir, the ball from Lord of the Rings, where it's all seeing. So it's a surveillance thing that they work with the state. They work with not just the state. They're a private company, so they work with multiple states. So he's in bed with the military industrial complex. Pretty good. Listen, that's the best way to do it. You gotta eventually work with the state. It's a permanent client. Permanent client. You can't make hip hop for the state. Listen, but I can make propaganda. I'm down. Listen, if you pay me enough, I'll do it. You can make hip hop for the Modi state. ji, You can please. absolutely make hip hop for the state. Listen, I'll whore myself out. I'm not afraid to say it. You just gotta say the right number. You know? Of course, you can make hip hop for the state. Huh? Of course, you can make hip hop for the state. China के लिए बना दे. Huh? China के लिए बना दे. You can make it for the state. I'm talking about, you don't understand how business works. You can't just make a product one time. Are you going to be making perpetually hip hop for the state for 20 years? अक्षय कुमार कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते. सर्विसेज होती है ना, वो सर्विसेज का लॉन्जेविटी होती है, तो समझ नहीं आता एक्चुअली. नहीं ये actually push कर देगा bro. अक्षय कुमार को देख, वो कर रहा है ना बार-बार. पिक्चर है, no, that's फ्यूचर में सारे इलेक्शंस रैप बैटल से डिसाइड होंगे. yes. Oh, that would be tight. पुश कर दे ब्रो. Wait, वही उस तो. डायरेक्शन में. नहीं but हो तो यही रहा है. राहुल गांधी का रैप फॉर शिट, मोदी स्पिट्स बार्स ब्रो, रैप बैटल तो चल रहे हैं. म्यूजिक डालना बाकी है बस पीछे. बीट लगा देंगे. वो एक आया था ना इलेक्शन के टाइम पे, some kids some bad hip hop shit, something came out. फर्स्ट टाइम ये था 2014 में. नहीं, अभी recently पे कोई hip hop आया था नहीं, but then maybe it wasn't Namo shit. Then it was something. Remove your fucking back out of my no fly zone. No fly zone. This man. You should get a fly for your zone. I don't need to fly. They are tracks. They're track pants. Okay, they don't come with flies. Sorry. You would know you're a pajama. I'm just used to wearing trousers. You're a and pajama shit. maximalist. I'm just using my trousers and अरे वाह, belts and एस्पड्रिल पहन के and belts and shit everywhere I go, unlike you. साले blacks टमाटर अगर मैंने उस in रात से public. चप्पल नहीं मंगवाई होती तो तेरे को पता भी, तू पहनता भी नहीं, तेरे को तू निकालता भी नहीं है. I have no idea what you're talking about actually. Yeah, fucking idiot. You wear the same shitty fucking. क्या हुआ था? Huh? क्या हुआ था वो? कुछ नहीं, चप्पल चाहिए थी मेरे को. Because it's a Japanese home and you can't wear your shoes inside. तेरा वाला? तूने जूते नहीं उतारे थे उस दिन? हाँ हाँ. तो उसी. But मतलब काफी बार उतरवाए थे bro. Correct. कुछ घरों में like जरूरी नहीं है Japanese home होगा. अरे I was a joke. Oh fuck. Oh fuck. Of course I get it. But in the Japan they sleep on the floor. They do weird shit. They sleep on the floor. They sit on the floor. Seriously? They squat. Hi. Yes. Bed नहीं होगा जापान में. So no, in the sense that they don't have like high beds. They just have a mattress on the floor, or like a very low. Yeah, they sleep basically on the floor. And yeah, They're they very sit on down to the earth floor. people. जमीन से जुड़े हुए हैं. No, it is better. Listen, Back के लिए हाँ 100%. it's better for your body on the अरे whole entirely. उनके वहाँ भैंचो earthquake भी तो होते रहते हैं. Japan, like we were there for 3 months in 2005. But Let me hear this theory. Go on.
नहीं like उसके बाद earthquakes भी होते रहते हैं तो वो लोग mattress में- जमीन पे बैठते हैं, जमीन पे सोते हैं। दिन सुना में- सुना आगे बता ना आगे बता। मैं कह रहा हूँ दिन में 4-5 अर्थक्वेक तो आती हैं वहां पे, हिलता है बिल्डिंग पूरा हिलता है, मतलब नॉर्मल है। तो वहाँ so maybe there is like it's easier to be on the floor and closer to the floor rather than have any structures like a You know what bunk it is where with an everything- earthquake? You know what you're supposed to do? It's not about being close to the floor or standing up because Yeah. things will fall on you regardless. The thing with an Getting under earthquake, why something. people because you go under a table so that if anything falls, you're protected by the table. You got to go Yeah. under a thing. So there's your logic is not it does not exist. कोई बात नहीं। You go into a table. हाँ कुछ chandelier गिर गया तू लेटा हुआ था बस वहाँ पे। अरे वो fuck. फ्लोर के तो ज्यादा पास था bro. फ्लोर में Well, भागने का I guess वो- it takes longer for you to die. You know, if you're standing up, it'll hit you sooner. So you're saving. तूने half second buy कर लिया अपने It's लिए. your buying time, and as you know, time is priceless. Precious. Time is the only resource that money can't buy. They're all after time. They're all trying to fucking. There's a whole anti-aging movement out there. Brian Johnson is fucking injecting Botox into his penis, and then he gets a doctor to say his penis is like an 18-year-old's. Even He does it. Yeah, do you know this guy? even Sushmita Sen used to do those ads for that Olay anti-aging cream. वो उसने कहाँ पे लगवाए हैं? We're talking about anti-aging. Anti-aging. huh? Good, thanks. Olay का नहीं है? Brian Johnson, you don't know Brian Johnson, bro? नहीं. Bro, he's AC/DC hilarious. का singer. He's got this thing called the Blueprint Protocol. Not that one. Another Brian Johnson. Brian Johnson, he's a singer. AC/DC का singer का नाम Brian Johnson था. Yeah. It's a very rare name actually. So it's quite shocking to find two individuals with the same. Correct. Brian and Johnson, those are hard to come by. Exactly. You know, True. it's like Hatim. Did you know any Brian Johnsons in school? I Very did. popular. Yeah. I didn't know any Brian Johnsons in school. Do you know any Brian Johnsons in school? No, you no. didn't. See, it's pretty rare. Yeah. What is making a sing agent? But I guess तू US में होता तो सुन लेता. I mean, that's racist now. I injected my joints with 300 million How is stem that cells. racist? I edited my DNA on a secret Badly. island to live forever. Zeroism. We the people who feel like I'm 25 again. Dana, fix my terrible. Stop reading your slam book out to us. 29 minutes you want to live. How I'm de-aging my penis. 455,000 views. This guy is nuts, but he actually does. I mean, he has medically reversed his biological age a fair bit. But he also, by the way, you know what he also does? He gets blood infusions from his young son. It's weird. It's some vampiric shit. Yeah, because Nice. I don't know. There's something I read about it, but of course I don't know the biological. Vampires भी तो खून चूस के ही जवान रहते हैं और क्या होता है? That's it's the same analogy. It was some billionaire only. Correct. Yeah. हाँ हमें शुरुआत से पता था bro. Correct. Yeah. Count John Sula. क्या शुरुआत से पता था हमें? कि खून चूस के होगी. हिलरी क्लिंटन भी तो करती है apparently नहीं? वो बच्चों का खून नहीं पीते ये लोग. दिख तो नहीं रहा bro. Adrenodrome क्या बोलते हैं उसको? Adrenochrome. And they're all pale as shit. अभी अब उसके बाद डेविड आइक की बात करते हैं. David भाई कौन है? Listen, what's Oh, this? like What's the conspiracy theorist, adrenochrome right? conspiracy theory blood drinking thing? Very very eloquently put. She knows. ये एक्चुअली ब्रिटिश रॉयल फैमिली के लिए भी बोलते हैं ना. हाँ. Is it? वो तो उन्होंने पॉपुलस का तो खून चूसा ही है. हाँ उसमें मैं देखो 100%. वो शायद मेटाफोर ही है. अरे यार तुम लोग को चुप होना पड़ेगा for this to work, okay? Uh-huh. Shut up. What's the adrenochrome blood thing conspiracy theory with the elite or something? The adrenochrome conspiracy theory is a baseless and false claim suggesting that powerful elites, including celebrities and politicians, harvest adrenochrome from children to use as a drug for its supposed rejuvenating and hallucinogenic effects. Hallucinogenic. Adrenochrome is a real chemical compound produced by the oxidation of adrenaline, but there's no scientific evidence that it has any of the effects claimed. Of course, because they won't let. Hallucinating. Yeah. Well, I guess. I mean, listen. Then I'm down. I want to try it out once, at the very least, if I can get the blood of children. So for the one time, quick shot. Make it a large. इंडिया में वैसे भी बहुत पॉपुलेशन है. पटियाला बना दे. I could tell it. Let Sadar kid. तो डॉक्टर डैंग से मिलता है ये सब कैसे हाउ डू दे गेट इट don't they get blood samples on a regular basis You mean can I walk down the road and get you mean Dr. Dhang se? Dr. Dang
Doctor ढंग से तो Dr. काम Dang, कर bro. Dang, he's selling. Dang, that's why doctor. his name is Dang because Because bad initially news. people were like, Dang, dude, he's selling children's blood. Dang, bro. God dang, man. So there's like, then he owned it. He's Yeah. like, yeah, Dang. मैं ही बच्चों के खून कर रहा हूँ. Dr. I Dang. am Dang. I'm He Doctor becomes, Dang. I am the one who dangs. पर You know, he कितने goes- कितने डॉक्टर डैंग है वैसे Yes, yes, dogs. I know. कितने सारे डॉक्टर डैंग है बहुत है ना. वो सारे भाई है ना एक्चुअली वो मिस्टर ओल्ड मैन मिस्टर डैग वाज अ हॉर्नी गाय ही हैड सम फकिंग It is hard. I only know the path labs, you know. हाँ तो उन्हीं की बात करें वो कह रहे हैं बहुत सारे ब्रांचेस है तो Oh, हाँ, Oh, हो सकता है, right. हो सकता है। Yeah, it's the same. Yeah, it's वही a तो है franchise. हाँ, It is a franchise like Dr. Lal Path Labs and shit. एक एक बेटे को एक एक बेटे को एक बेटे को. Hmm. That's how franchises work. हाँ हाँ ये डैंग्स और बता यार, टोगी क्या चल रहा है? कुछ नहीं bro, सही चल रहा है कुछ नहीं सही चल रहा. वाओ. अगर कुछ नहीं चल रहा तो सही क्या चल रहा है उसमें जो भी चल रहा है सही चल रहा है तो चल क्या रहा है I जो guess सही चल रहा है what to say? No news is good news, right? Yeah. So, कुछ नहीं चल रहा है, that's fine. That is good. नहीं चल रहा सही है Yeah. पागल तू कुछ चलाना चाहता है? The fuck are you all about, man? Listen, that's not what life is about. नहीं Yeah. I would, you know, sometimes. कुछ चलना जरूरी नहीं है कुछ Sometimes सही I'm- होना जरूरी है Yeah, sometimes I'm like, what if I retire? You know, yeah about time just lead a life of leisure. yeah You know, it's been hard so far listen, no, extremely dude, it's not easy to drop out of school. Yes. And then yeah, trust me someone's done listen, it twice buddy It takes a, yeah, you have to work a lot at fucking up. और guts bro hard work. तू जो drop out courage किया? चाहिए हाँ, तू जो drop out जो किया? क्या बोलता गूदा बोलता कि क्या बोलता हाँ गूदा गाड़ में हाँ, गूदा, हम सब गाड़ में हैं गूदा। हम सब हैं यहाँ पे yes Yes, finally yeah, represent which is why we're on this podcast. represent nobody but us dropouts yes. Bunch of dropout artists, है ना? But hey, at least we did college. yeah please for some time yeah At least, yeah, at least we dropped out of college. एक्सपीरियंस मिलता है कॉलेज जाना होता है ना गेट लाइफ क्यों एक्सपीरियंस नहीं करना कर चाहिए दिया वो? हाँ क्यों नहीं करना चाहिए वो भी तो समझना है ना हाँ वो तो एटलीस्ट हम समझे Correct. आदमी करके ही सीखता है. तो तू बता भाई मुंडराज, हाँ जी तूने गाने का मिक्स बना दिया एक है, हाँ तो कब करेगा तू इसका है म्यूजिक वीडियो कब करेगा? The fans want to know. Listen, hello, he's made a new song. He's making 2 songs, and we're gonna make 7 music videos out of the 2 songs. Okay, so tell me what it is. When are we doing We're it? gonna make one music video out of the 2 songs. Oh, we're gonna make 4 songs out of 1 music video. Correct. How does that math go? The Christmas special is actually the So, centerpiece. when are we doing it? What's up? 10 दिन में बात करते. Let me finish off the first song. उसका थोड़ा revision करना है बस. नाइक में बोलेगा तू चूती है. मैं कहा 10 दिन में बात करते हैं. पहले गाने का एक वर्ड थोड़ा बदलना सा है. चूतिया सा लग रहा है. हाँ ठीक है, तूने लिखा तो और क्या होगा भाई. और नहीं तो क्या. बट बाकी जो तूने सुना मिक्स इसको भी भेजा था मैंने इसकी एडवाइस मैं भी सुनूंगा सुन वैसे। लेंगे घर हाँ, जाके. ठीक है. ऐसे सुनो ना. ठीक है. You gotta schedule time with him. You can't just send him anything like that. He's a busy guy. You be like, hey, can I send you a track for you to listen tonight at maybe whatever your time? Give me a slot. Give me a slot. I'll set the time then. अबे आराम से सुनूंगा bro He's like, talk to my people. ठीक है. He was like, yeah. Time Listen, नहीं I'm gonna है। send you a number. Yeah. Call Subhanshi. Subhanshi takes care of these things for me. ठीक है. Okay. Nice. Great bit. Hilarious. Everyone in the audience is like, wow. Who asked? Why has no one done it before? Yeah. Were you there that day when they were arguing, when Mithra was arguing about what's the origin of that? I'm not your friend, pal. I'm not your pal friend. Were you there that day? What is the origin? When we started talking about Buddy also. I'm not your buddy, pal. I'm not your pal Yes, friend. I'm not yes, your friend. Yeah, something like यहाँ that. हुआ था. इधर ही हुआ था ना? conversation. हाँ, फिर मैं था शायद. So turns out Oceans did do it before South Park, but the bit predates even Oceans. It's been around since the 60s or something.
It's like folk music. Everyone's just picking up the No, composition we were and even doing it discussing again. right now how like even in jazz there is some canon and Standards then and there are standards, right? They're called jazz standards, and then people do their versions of it. So a lot like where it is with classical music, where Correct. yeah. The classical, the jazz standards are more like some are more Oh, yeah, he defined, but there are a mentioned lot it, of ambiguous compositions कि पता नहीं किसने बनाया था, ये कैसे आया था. हाँ. But classical में at least all of that is defined. It's just that the हाँ. copyright is expired on that. So then whoever makes their own Yeah. recording then owns that version. Blah blah blah. True. What? Hang loose or call me. What did you mean by that? What is this? Hang loose or call me? Because it means two things. Call me while hanging loose. Ooh. Ooh. Is that it? Call Subhanshi. She'll set up a time. Subhanshi, bro. The amorphous assistant we have. We share her actually. We're sharing her. Okay. We're sharing her. Okay. We're sharing her in many ways than one. The nature of this Buddy. dynamic. Okay. Interesting. Yeah, Sure. yeah. Well, Okay. How do you feel about that, Ishwar? Perfect, bro. Okay. Perfect is a word. It's an adjective. Describe something. Okay. Yeah, Ishwar is equally loquacious, huh? Like क्या था ना Subhanshi? Shubhanshi, yes. Good luck to Subhanshi. Good luck to you all. शुभांशी होता है कि शुभांशी होना चाहिए? उससे पूछना. अबे ये क्या होता है? शुभांशी है ना, मैंने पहले शुभांशी ही बोला था. हाँ. शुभांशी. युवराज को नहीं पता. चूतिया है ना वो, अनपढ़ गवार है, पता नहीं कहाँ से आ गया. DPS Anyone who does not same place you came from, buddy. जिनको सुभाषी नहीं पता वो चूते अनपढ़ गवार है. Yeah, yes. In my books, listen, it's my mic is my books. That's how it works. Okay. So tell me what's happened this week, man. Anything interesting? Anything masaledar? There's some hostages in Gaza. Aren't Yeah, there? old Israeli. Is there some Israeli hostages in नहीं Gaza? अब पाकिस्तानियों को पकड़ रखा है. Bro, काफी टाइम से हो तो. गेम बदल देते हैं. काफी टाइम से हो तो. But अभी recently कुछ खबर आई, कुछ बदला है, कुछ बदलाव हुआ है, कुछ हुआ है, पता नहीं. Listen, I don't read this shit. Listen, यार मैं थक I don't गया like यार. being depressed. मैं going थक गया on- यार war से. It's been going on for so long actually. The next time I'm going to pay attention to it is when Akshay Kumar plays some Gazan soldier in the Indian remake biopic this time. और वो गाजन सोल्जर को अक्षय कुमार बना देगा. हाँ वही तो. क्या बात? नहीं. नहीं. सच्ची. अपने मुल्क के लिए मैं मर मिटूंगा. Wow. Perfect bro. कौन सी उसकी आखिरी पिक्चर अच्छी थी? मुझे नहीं पता. I saw that thing. What नमस्ते लंदन. Entertainment. वो बड़ी एंटरटेनमेंट से फक ऑल मूवी. वही है जो कुत्ते को सारी जायदाद मिलती है. वही बताया था ना. अच्छा entertainment. वो है ये कह रहा है. I just like that. Bro बेस्ट रोल है जो मैंने आज तक देखा है. कुत्ते का? हाँ, बेस्ट एक्टिंग. कुत्ते का? कुत्ते का? हाँ, फुल मेथड एक्टिंग थी. वो अक्षय कुमार के बारे में नहीं पूछ रहा था. पर हाँ कौन सा? Akshay Kumar to me, I mean, of course, it's got to be मुझसे शादी करोगी. That's his best role. That to me is his best role, dude. हेरा फेरी भी हो सकता है. Hera Fairy is also good. सिंगिस किंग भी बहुत बढ़िया है. Singer's King is also good. No, those are good, but like nothing gets me. Yeah, Wicked Sunny Like is, Wicked Sunny, dude. Like yeah. nothing, is like has such an imprint in my brain memory. मतलब अगर Also, कमीना I कभी think देखना regular हो, memory, I guess. कमीना कभी समझना हो ना. कमीना, yes. वो Bro exactly. उसमें दुग्गल साहब भी बहुत सही हो. हाँ Yeah. बेचारे. दुग्गल साहब बहुत सही वो हो. खरबंदा है ना उसका कुछ नाम. नहीं, कादर कादर खान. कादर खान. तू कुलभूषण के बारे में सोच. कुलभूषण, हाँ. वो नहीं है. दुग्गल साहब कौन है फिर? वो कादर खान खान? यार. कादर खान used to write all the dialogues also for fucking Govinda David Dhawan कुलभूषण कौन movies. है? कुलभूषण वही है जो मिर्जापुर में नहीं होता. पंकज जो त्रिपाठी दादा का बना dad. था ना मिर्जा. Yes, correct. वो कुलभूषण. अच्छा है. वो कुलभूषण है, correct. कादर correct. खान is ये different. कादर खान है, मैं कुलभूषण सोच रहा था. कादर खान 90s legend. किसके कादर? How do you spell his name? KADER. क्यू है मेरे ख्याल से. I think it's DER. Q है मेरे ख्याल. K-A-D-E-R. Yeah. Kader. Yeah. हाँ. के है क्यू है. I think Bro, but like, yeah, in fact, you know what I did? So actually, Bollywood में Q और वो K नहीं रखेंगे. how did Om Puri's nose get that big? Oh bro, yeah. I'm wondering what happened there because it's like a growth. It's like a pakoda. मतलब कि किसी ने तल दिया क्या उसको? Like, Singer's King में तो बहुत obvious हो जाता है. what happened? I think over age, I guess his nose Yeah. blew the fuck up, huh?
Did he always start like this? Yeah, what happened to his nose, man? His nose, that's nose. It's insane. That is an insane nose. कादर खान की वैसे बहुत बड़ी नोज है. हाँ, but Kader Khan was a big उसी से मेरे को man. याद आया मेरे को कि ओमपुरी का नाक बहुत और बड़ा है. face नहीं, is but ये also देख, heavy set, hold so- the fuck on, man. You know Kader Khan. Dude. Okay, so look at this. You This look is at Ompuri's Ompuri nose. Okay. when he was younger, when he had a Yes. reasonable nose. ये उसमें ना गांधी में है मेरे ख्याल I से. don't remember. I saw that. Gandhi भी saw in school, ना? Ben Kingsley वाली. तो क्या याद स्कूल में है? नहीं दिखाया था. Yes. वसंत विहार में दिखाया था. AVH में छोटे वाले उसमें गांधी दिखाई थी हमें भाई. याद है तेरे को? नहीं मेरे को नहीं याद. Tomato साला. Hates him. Yeah, but this is the reason. So I'm gonna do, yes. I'm gonna have to do the whole nose thing on the for you to see because it is absurd what happened to his nose. And I'm wondering how does that materialize? I'm wondering for myself, will my nose just expand? I believe your nose and your ears keep growing till the day you die. I've Does heard your that. nose gain weight? Should I stop eating can. carbs? Well, I guess I'll stop eating carbs regardless. Huh? just don't tell lies. The Pinocchio wale Or scene. maybe hai he na? told a bunch of lies, bro. Jesus Christ. What a fucking liar. R.I.P. Rip. Yes. Rest in power. तुमने वो मूवी देखी हंगामा? Rest in Yes. Pinocchio. Yes, I love Hangama. Jeetu from Bro, Videocon is my spirit animal. परेश रावल भी insane actor है bro in roles के Akshay लिए. Khanna. Paresh Rawal is in Hangama is nuts. Oh my god. और वो जो बीवी के साथ लड़ता रहता है. हाँ. हे राधे कहाँ आ गए इस नर्क में. Bro वो like काफी funny है वो कि like तेरी उसकी बीवी पूछ रही है तेरा अफेयर चल रहा है कौन सा है? मेरे को याद आ गया कौन सी पिक्चर में मैं तो कभी अभी बात कर रहा था ना कि मैंने कुल्टा जिंदगी में कभी एक ही बार सुना है. वो भी परेश रावल ने बोला था और आई थिंक उसने बोला है आवारा पागल दीवाना में. अच्छा. अपनी या किसी को कुछ बोलता है कुल्टा बोलता है वो. And I think and I just don't know what does that word mean? It means a whore or something like that. Okay. क्या बात कर रहे हैं? Seriously? कुछ तो it's an offensive term for a woman. I don't know. नहीं मुझे नहीं पता इतना I offensive. know exactly. We know what it is. We know it's an offensive word for a lady. But I Or don't witch or something. I'm not sure. There's something. which. Wow. डायन नहीं बोल देंगे फिर. अरे बहुत पर्यायवाची शब्द होते हैं हमारे भाषा में. Such a rich. But जो हाँ जिन चीजों से प्यार होता है ना उनको बहुत सारे नाम देते हैं. कमीनी, कुल्टा, Dayan, चुड़ैल, yes. खसमानो खानी. खसमानु खानी. खसमानो खानी है मर जानी. हाँ तो पंजाबी से आया तो फिर तो दो चार और. खसमानु खानी क्या मतलब क्यों होता है? खसमानु खान actually literal translation. हाँ. Khasam means your husband, your spouse. So khasmanu khana Eating means your you eat the dead body of your husband. So wait, Sigmund Freud didn't talk about this. He talked about the fucking son eating the father, the daughter eating the mother. But what about the fucking husband? Sigmund Freud Wife कभी eating the husband? Hello. Sigmund Freud कुछ नहीं है वो पंजाब के सामने. हाँ, Sigmund Freud कभी जनरेटर के आवाज पे नाचा ही नहीं है. उसको क्या पता? हाँ, उसको Sigmund Freud होना चाहिए. Yeah. Sigmund Freud. Sigmund Floyd. Freddie Maybe some Sardaji who's a Pink Floyd fan. Freddie Sigmund. वो Freddie पाजी आए सी. Freddie Paji. हाँ. और Fredinder. Fredinder नहीं हो सकता है. Shut up. Listen, you don't ruin the joke. You came in, you ruined the joke. There's so much people were all on the floor. They were laughing with me. You came in. You had to overdo it. Carl Joginder. Carl Joginder. What is that from? Carl Jung. Carl Jung. Oh, right. Junginder. ये stretch नहीं कर रहा. It is stretch. I didn't laugh. Did I say Oh, anything? okay, sorry. Did I laugh, bro? No, we're nice to our guests. Laugh. We can't both be nice to our guests. Carl Jung. Okay. Carl Jung. I don't know about that. I don't know what to do with that name. Nothing. Move on. Yeah? Move on from the name. Cool. Tell me. What's next? बस यार. What's next? What is next? तो तेरे को पता है पाकिस्तान शायद second most inbred country है world में. Yes. First कौन है? Oh, I don't. Well. हाँ यार. Holy shit. Fucked up part वही है bro. First कौन है फिर? तेरे को पता है? नहीं मुझे नहीं पता. तो ये क्या information आई? Shut up. What sort of information? Shut up. India Which now. country has the highest rate of consanguinity across the world? Bro, India now. No, India is 12%. Oh. And parts of North Africa, marriage between blood relatives.
One of the countries with the highest rates is Saudi Arabia, where the prevalence of consanguineous marriages can reach up to 60%. Other countries 60%? with high rates include Pakistan, Qatar, and Sudan, where cultural and social traditions often favor cousin marriages. However, consanguinity can She's so increase the PC. risk of genetic She's disorders so PC. She has to due say, to oh, the cultural closer things. genetic ये नहीं कि भाई मत करो यार, तुम्हारे बच्चे पागल हो जाएंगे. But इसने बताया नहीं ढंग से. देख पाकिस्तान का 70 है. And fuck it. तू लड़ ले उससे, हैं? लड़ ले तू उससे. मैं क्यों लड़ूं भाई कंप्यूटर से? शुभांशी लड़ेगी मेरे लिए. शुभांशी को मैं यही तो नहीं है सुनांशी। ये शुभांशी नाम ही 2 बार बदल दिया. सुप्रांशी कौन है भाई? पता नहीं चेंज होएगा अब लाइक एवोल्यूशन ब्रो एवोल्यूशन। सुहासिनी. Yeah. सुभाषिनी. सुभाषिनी. और भाई सुभाष. But fucked up bro। That's pretty fucked up. Hmm. Yes, Pakistan is the highest, and well, their height is decreasing, isn't it? Height is decreasing. I mean, there's a lot of malnutrition. I mean, that state has failed. That state can't even feed its own people. तुम्हें एक्चुअली ना मेरे साथ करना चाहिए था वो क्या पाकिस्तान वाला? वो जो गेम था। हाँ Right. Well, we can do another one. We'll do a music one. युवराज 4-0 या कुछ हारता, हाँ? सारे हारता हुए ऐसे अच्छा मैं सारे हारता. So for 12. Well, 11 shoulda woulda coulda. हाँ. मैं पाकिस्तान एक्सपर्ट हूँ। He is. और मैं देशभक्त हूँ. हाँ, तो मेरे को बता कि डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं ब्रो मेरे पाकिस्तान कपड़े में? देख आज. मेरे कपड़े भी देख ले. कुछ नहीं ब्रो, हर ऑलमोस्ट हर जगह ही पता नहीं हर दिन कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है, बता देते हैं आर्मी वालों को। पाकिस्तान में? हाँ हाँ टेररिस्ट अटैक्स पाकिस्तान में कौन कर रहा है भाई? मतलब वैसे फ्रीडम फाइटर अटैक्स भी बोल सकते हैं। Oh right, insurgents. Oh, but then who's rebelling? Which areas are rebelling? बलोचिस्तान, KPK। Balochistan has an insurgency and they're fighting the Pakistani state. Correct. Oh, but this is maybe perhaps something to do with our goals. So we have objectives. No, Listen, of it course, aligns we don't favorably. नहीं नहीं किसके क्या बात कर रहे हो? I'm saying maybe it aligns a little favorably with our best It's just interests. coincidentally good for It's India. it's a bit of a coinky dink. ना We love coinky dinks. नहीं ब्रो, हम गांधी और बुद्ध के देश से हैं। Correct. हमें correct. से- Ashoka, Wow. Ashoka rocks. अशोका ने कलिंगा में rocks बस has- करोड़ों लोग की हाँ। गांड नहीं मारी थी पहले. हाँ तो हम तो तभी तो तो वो तो बाद में आता तो वो है. बाद में आता है ना देखना, तो हाँ। हम पहले गांड मार के फिर माफी मांग लेंगे वही तो अशोका कलिंगा. दुनिया से चलती है ब्रो। This is literally what it is. What it is, I think Al Pacino said, I asked God for a bike and he said that's not, and I realized that's not how it works, so I stole a bike and asked for forgiveness. That's the Catholic way to do it. You to commit the crime, then you say sorry, God. Yeah. Sorry, I ये offended काफी कन्वीनियंट है you." ब्रो। This is the way to do it. Nice. मतलब फकअप से फकअप करते रहते तो बस सॉरी, Yeah. और फिर सही है सीन। Loophole. Well, say 10 Hail Marys. Oh, do some you gotta say contrition. You gotta do a couple of Hail Marys, some shit. He's back on the job. Nice. He is, but yeah. Okay. निकल यार लैवेंडर हाइबिस्कस चाय बना दे. तू पिएगा? नहीं तो 2 कप ले आई. सुन काफी शॉर्ट है ये वाली केबल। वो हेडफोन की. I know. एम्प को पास कर लेगा. Just pull it. Is that better? There you go, buddy. There you go, man. So yeah, so insurgency is in Balochistan 1. Next, what else? खैबर पख्तूनख्वा, Khyber Pakhtunkhwa. Yes. That's north. जो अफगानिस्तान क्लेम कर Can I have that with the Can I have that with the butter naan or something? अचार भी लेके आऊंगा। और आई गेस सिंध में भी हो रहा होगा थोड़ा बहुत। हो रहा होगा. और कश्मीर. सिंध का है. उधर भी उनके वो क्या अपेरेंटली स्ट्राइक्स चल रही है। स्ट्राइक्स चल रही है। Please, it's POK. Fucking POJK, POJK. न्यू Shut टर्म। the fuck up. New. I'm gonna. You know what it is? I अपेरेंटली might censor that word. क्या Which one? Azad. Kashmir. Why? This is not. It is not. It's मकबूजा कश्मीर। Pakistan occupied J&K. हाँ हाँ. Correct. लेकिन वो उसको बोलते हैं. तो बोलने दे भैंस, हम नहीं बोलते ये वो सब. ब्रो इनब्रेड है। Yes. What the fuck? उनकी बातें सुनेगा तू। What has bread got to do with it? इनब्रेड है वो। Yeah. ये ब्रेड नहीं। Sorry, it's a joke. ओह It's a joke. It's a joke. High level. Yeah. ओह सॉरी, Comedy. मैं मेरे सर के ऊपर से जा रहे हो ब्रो। कोई नहीं, ऑडियंस मेरी height ज्यादा है ऑडियंस ना। की भी सर के ऊपर से चलाएगा. अबे तो अबे मेरी हाइट ज्यादा है ना इसलिए. अच्छा, ठीक है. अच्छा, ठीक है. मुझे नीचे आने की कोई जरूरत नहीं है. अच्छा, ओके.
True. Okay. So that's POJK. And then what else? Yeah, people from और just बचा ही kidding. क्या है ब्रो? और बस पंजाब बचा, उसके बाद तो पंजाब और सिंध. Okay. और सिंध में क्यों दंगे हुए हैं भाई? सिंध में क्या है? सिंध में दंगे हुए हैं? तू कह रहा था शायद तो सिंध में भी हो रहा होगा. नहीं मैं कह रहा हूँ स्ट्राइक्स चल रहे थे वो Okay, POK में, okay. POJK में. Okay. POJK में. POJK stands for Punjab. Oh, just kidding. वाह जी वाह, तुसी तो कमाल के दिता. We are all yaar Paji, we are from POJK. Punjab. Oh, just kidding. बल्ले. वो वाला स्टेप क्यों कौन सा? चकरे बटे नवनी गिल्ली बापरा. Okay. Right. Good one. जस्ट इन केस हम पंजाबीज को बताना चाह रहे हैं ये इसके साथ प्रॉब्लम है, हम ऐसा नहीं सोचते. मैं भी पंजाबी हूँ. It's hello. I have. Yeah, he's got all the rights. Yeah. चल हाँ, he's a चल, Punjaban. हाँ. Yeah. Yeah. मैं नहीं बोल सकता पंजाब के बारे में. मेरे तो थोड़ी पंजाबी भी गल कर लेंदा, मैंने थोड़ी चीजें आंदी है. मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं. मैं हुन मैं अपनी मम्मी नाल भी गल करना लगा थोड़ी चीजें. शुरू कर लिया तू? शुरू कर ले. चल थोड़ी चंगी सी गल है. चल मैं भी तेरे नाल नहीं वो पॉडकास्ट ते ना करियो. पॉडकास्ट ना करा. ओ यार. नहीं फिर ही तो असली कॉमेडी होगी. Because we have a bunch of viewers in Mauritius somehow. I don't understand that. ओ मॉरिशियन पाजी ओ क्या ला. रोटी छोटी खा ली. मॉरिशस में वैसे काफी इंडियंस है. Okay. हाँ बड़े सारे. Well, that explains. बड़े सारे. लाइक मेरे ख्याल मेरे से भी सारे सारे मॉरिशियन फ्रेंड्स है. वो एथो ही गए थे. Okay. Right. मतलब 200 साल पहले. 200 साल पहले तेरे म्यूजिशियन फ्रेंड्स यहाँ से गए थे? वो यार उन्होंने दे एंसेस्टर जिथे फिजी च बड़े हुए ने. slaves Don't talk on the podcast in Punjabi, bro. This is Right. a Punjabi language It's podcast. one of dude. the sorry, right? fuck? It's like all these guys fucked off to like Fiji, Unprofessional. Sorry, guys. Sorry. पेंडू बैठा है बोंगिया मारा है. बोंगिया क्यों होता है? बोंगे क्या होता है रो? Pongia, it's like I guess फट्टे मार रहे हैं something. Okay. पट्टे क्या होते हैं? पट्टे मतलब कि lame poor Like- joke. Oh. PJ. हाँ, No, true. no, फट्टे. like, फट्टे और like फट्टे मारना is like telling long tales. yes. Yes. फट्टे वो दोनों होते हैं. शेकिया मारना. दोनों बोलते हैं. पूर जोक को भी बोलते हैं फट्टे. और मुझे पोर जोक का नहीं पता. और long tales को भी बोलते हैं. मुझे लॉन्ग टेल्स का पता है. मुझे Our friend who does that. We know. Yes. We know our friend who does that. yeah. Long, very. If only he had a long tail. When you would smash it, you want to smash that tail. No. We know you like chasing tail around here. Everyone knows. If you wanted, wait. Shut up. I don't know. You lent that way, but sure, yeah, I don't lean that way. it's good. Certainly Listen, not you that gotta way. mix it up every now and then. You gotta, yeah. It's variety is the spice of life. Sometimes it's a lady. Sometimes it's a. तू थोड़ी और पंजाबी बोल लेगा इसको बंद करने. मेरी खत्म हो चुकी है पंजाबी में. बोंगिया पेंडू बस इत्थे उत्थे थल्ले Yeah. दारू गाली. Listen, he's honest about his Punjabi, unlike Rishu, who will just fucking say all incorrectly, but with just so much confidence that you want to slap him. You know, Yes. a little bit. Definitely. रोज दिन गिग के बाद उसने लोगों को ढूंढ लिया था. उसको पता लगा यूपी के हैं. और ब्रो 2-3 घंटे बैठ के बात सुबह की तुम उनसे. 7 बजे वहां हाँ, पहुंचे. हाँ लाइक हमें वहां पे प्ले तेरा कर. सेट कितने बजे था? 3 बजे तेरा सेट था. हाँ अराउंड मेरे ख्याल से 6-7 बजे तक पहुंच गए थे वापस से रिजॉर्ट. और वो वहां पे बैठ के ब्रो बस बात कर रहे हैं उनसे. वो भूल भी गया कि हम हैं. लगा हुआ है बस. He gets that way when he's having a good time. मैं उससे पूछा तो क्या बात कर रहा था उनसे. मैं He doesn't remember. ब्रो He has no नहीं बोलता वो. मैं उनको बताया था कि तुम्हें कुछ नहीं पता यूपी के बारे में. मैं बताऊंगा तुम्हें. That's his attitude with everything. I'll blank you under the table. I'll drink you under the table. I'll snort you under the table. Yeah. I know you. You don't know shit. Everything. I can eat faster than you. Last night at 4:30 I a.m. can eat faster than you. Yes, last night. Yes. Last night at 4:30 a.m. He's done it so many times. He's just wanted to do. I can eat that faster. I'm like, dude, I'm not trying to compete. I want to enjoy this meal. Can I just eat the shawarma like a normal person? Bro, last night 4:30 a.m. we ordered these 2 garlic breads. We went to a movie. Movie के बाद जाके अक्कूस पे burger लिए. Burger के बाद कहता है, bro, I can finish this this burger faster. I'm like, dude, I don't know. Shut up. अक्कूस के बर्गर वैसे काफी सही होते Pretty हैं. good. हाँ. Pretty, Akku's burgers, tight shit. Vasant Tight. The Bro G. Oh my god. Anyway, sorry, you were अब saying क्या something. है ये? Hang loose. Call me नहीं. It's not call me, it's hang loose. कहीं तेरे को अक्कूस के ऑर्डर आ जाए. हैं? कहीं तेरे को अक्कूस के ऑर्डर आ जाए. हेलो सुखी. तो आज तो मेरे को लगता है खाना ही पड़ेगा. कुछ हमने बात कर ली है. ब्रो उनको स्पॉन्सर करना चाहिए हमें यहाँ पे. Right. बर्गर Of भेजो. course. बर्गर हमारी भेजो. इतनी सारी रीच है ना एक्चुअली. बर्गर भेजो भाई. लाखों लोग हमको देखते हैं रोज. भाई तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं कर रहा है. ठीक है ना. कोई पॉडकास्ट में तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा है.
Eventually, hopefully, Hmm. you know, like 27 years from now. हर someone will pay us. पॉडकास्ट शुरू से पहले यहाँ पे someone will pay बर्गर us होना a चाहिए, यहाँ पे बर्गर होना चाहिए अक्कू से, Yeah. कस्टम हमारे लिए देख special. हम बड़ी चीजें स्पॉन्सर कर चुके हैं, ठीक है. हमने यहाँ पे डालविनी, हमने कोका कोला, नहीं डालविनी, एब्सोल्यूट, जिन, हेंड्रिक्स, हमने बड़ी सारी चीजें स्पॉन्सर करके बड़े सारे ब्रांड, ब्रुक, किंगफिशर प्रीमियम, सिगार्स के ब्रांड, हमने बड़ी सारी चीज. Yes, other things we don't want to name. नहीं तो ब्रो तुम में से कभी किसी ने उसको देखे चाहत फतेह अली खान? नहीं. यस, Is he a copycat? ब्रो वो बस वो पैरोडी, वो अलग लाइक एग्जैक्टली तूने दिखाया भी है मुझे, मैंने अच्छा, मैंने हाँ, देखा भी है, parody. तूने दिखाया भी है मुझे. पर लाइक आई गेस उसने अपने काफी गाने निकाल लिए. तो PSL है ना, पाकिस्तान की वो क्रिकेट लीग है, Correct. उसके लिए उसने मतलब ऑफिशियल गाना नहीं, पर उसने एक गाना बनाया था जिसमें ये जो प्यारा PSL है, ये जो अपना PSL है, इस PSL में है एक झंडा और झंडे में है एक डंडा. ये था. देखेगा? वाओ, क्रिकेट आई गेस. लगाओ. क्या था? Should I put it on? चल सुनते हैं. Well, I can edit it in, I guess, because we're doing commentary, so we can lay it over. हाँ, You know. ये गाइस अब रिएक्शन वीडियो बन चुका है. स्टाइल बेंडिंग गाइस. Style bending, Yeah. plug for style We bending. don't have a format of this podcast. We play Have fast and you, loose. have you plugged style benders yet? We do what we Check gotta it. do. Have you you know? plugged style benders yet? Yes, we have already. Yes, Listen. all right. Plugs? Plug बोलते हैं ना, when you drop. That's what the cool kids say, यार. It's a lingo. Get with it. Sorry. I mean, like, तू बजा रहा है जो म्यूजिक, ठीक है? अब you gotta get in touch bro, with it. मैं बजा रहा हूँ, मैं फालतू बकवास नहीं You're करता. wrong. He's not. Yeah. What? So the marketing team needs to just do that. Okay? He's just gonna make the music. All right, but ये सुभांशी का काम है. It's okay. You gotta get. ओह याद आ सुभांशी का गया, काम है, बोल दिया. याद आ गया भाई. All I'm saying is, bro, क्या just नाम है इसका? तू रख. तू try- डाल. try to चाहत get- फतेह अली खान चाहत फतेह अली खान. वही था ना पूरा. हाँ. चाहत, हाँ. just trying to get on आ गया. fleek, bro. Don't worry. तू खुद का तो संभाल ले पहले. अच्छा, क्या? इसको मैं देख चुका हूँ, bro. इसको मैं देख. बदो-बदी. I know this fucker. This hilarious hairstyle he's got. How the It's a what? hairstyle. It's not their style. It is a style, man. Lota bum bum. No, I can't react to this. Is too crass. I'm not gonna react to this shit, dude. We gotta that. give him space. हम एक्चुअली युवराज के हाँ जी, रख फेवरेट, दो यहाँ पे, आगे ले आओ. हाँ? तेरे फेवरेट टॉपिक पे बात करते हैं, पाकिस्तानी रोडीज, Yes. It's called Living on the Edge with Wakar Zaka. इल्यूमिनाटीज. Yes. Waka Zaka Flame. He's a hip hop guy. Zionists are Illuminatis who. क्या? ये What नीचे was the होना। rest? आप जायनिस्ट हैं, आपके आप वो Zionist- पीठ पे Zionists are Illuminati. Zionists, guys, breaking news. Zionists are Illuminatis that worship Satan. Correct. Yes. Correct. You see, Living on the Edge with Wakar Zaka has some. Can you speak into the mic? Have you forgotten how to do your job? Actually, it hasn't been. ओह सुक्की, तेरी गलती है. नहीं यार, ऐसे थोड़ी बोलूंगा. मेरी गलती तो है ही नहीं. ये टाइम पे नहीं है. ऐसे थोड़ी हो नहीं बोलूंगा. सकती मेरी गलती. It is impossible. ये देख, I have been तूने excluded from the तूने possibility. शुरू कर दिया देख. From even the realm of possibility. मैंने कुछ नहीं बोला. Listen. ब्रो कंटेंट Yeah. I'm a professional. Yeah. I wish you were content. नहीं करना If I पड़ेगा. were content, I would just stop doing anything. You have to be, yeah. You gotta have some कुछ खुजली होनी चाहिए. डिसकंटेंट. गाने में अगर खुजली ना हो तो काम नहीं कर सकता. मतलब तो बंदा उखाड़ नहीं सकता. डर्मिकोल मत You can eke खरीदो. out a mediocre existence, man. Good for you, buddy. You know? सब चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, सब सही है. हाँ. है ना? Yeah. That's it, yeah. इस पे भी गाना बनाना है. करते हैं. कोई बॉलीवुड ट्रैक लेना, उसमें से वही वर्ड रिप्लेसमेंट. अच्छा, अभी कोई भी गाना सुना दे. What Bollywood गाना is coming in your mind these days? पपीता क्या? खा हाँ, चल इसके बाद जाता हूँ. पपीता खा. जिसके आगे नहीं आता. मुझे भी नहीं आता. मेरे को उसको हाँ, तो you can't just have you need a कबूतर couple of you need a Okay. bit of a runway Okay. where you know the pre-chorus also. तू बता ना, तेरे को पता होंगे ब्रो बॉलीवुड गाने. अरे तो गेस्ट शाम है गार्ड हाँ, है डिस्को हो गया वाइब, नशा. ठीक है. डॉन. पल ठीक है. भी है, लंड भी है और है बबल गार्ड में कूदा. डॉन. गार्ड में कूदा. क्यों छाई है. झाटू गिरिया. नहीं छाई है. फिर भी है. Listen, असली word तो बेटा भी है. बुंड फाड़े या. yeah. क्यों 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 भड़वा क्यों फड़ा क्यों हाँ, भड़वा सा है बुंड. क्यों भड़वासा है दिल. दिल.
क्यों भड़वा सा है दिल. क्यों है लंबा ये बिल. मेरी गांड में तो अब तक नहीं है ये घोसा. आज की रात. गुस्सा आज ये डालना है क्या? नहीं आज ये गांड खो जाएगा. नहीं मारना है क्या? अच्छा मारना है फाड़ना है क्या, गाड़ना है क्या. भाई युवराज तो extreme. Dude. Bruh. Delhi hip hop scene represent hardest shot. शिवस तो उसको बोल हाथ में शिवास. भाई ने बोला मेरे को चाहिए हाथ में शिवस, सभी शिवस. Classic song from. Remember the one I sent you last night? I don't look at your reels, bro. No, voice note song. Oh, I don't remember that song though. I was editing. 4 तोला लोड़ा गाड़ मेरा खोल जा, ना हाँ. मुझको कोई ठोके ना किसी ने ठोका. Yeah. फिर चुसैन पीछे से कहता word. Word. And then we thought we thinking about calculating 4 tola loda. It's 40 grams of penis. That's not very much at all actually. 4 tola loda That's guard what mera they left khol after they're done taking it away in the beginning when they're born. No, these guys, these Right. fellas, the Muslims. The circumcision. They Yes. take a half most of it out. What is left? 4 tole load of What do you think a dick weighs in I said, grams? listen. Like approximately. Listen. I don't know what they cut. I don't know what's left, but I think I imagine that's what it is. तो हमने वो लाइक वेइंग स्केल पे वे करके तो हम- किचन वाले. हम सबके 1.5 किलो गए क्या? हम सबके 1.5 किलो गए क्या? नहीं, मेरे 12. मेरे 12 किलो का. Okay. हाँ तू सरदार है ना इसलिए. Exactly. Correct. ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है वो तीसरा हाथ ना उठ जाता है. फिर जाता नहीं है नीचे. Wow. Yeah. हैंड तो पंप ये- उखाड़ Depends on दूंगा. who's in the room. हैंड पंप करके उखाड़ दूंगा. Depends on who's on my lap. इधर आ चुका है पॉडकास्ट. Yeah. कांग्रेट्स गाइस को. इधर वापस आ चुका है पॉडकास्ट. ये ओरिजिनल. क्या कर रहा है तू? तुझको अनरैप तो कर दे. मैं बात कर रहा हूँ ना इससे. केबल क्या टाई. है? अच्छा. सब बढ़िया हो गया. Okay. You can't extend it. अरे कर दिया मैंने. Okay, ठीक है. You can extend the arm, no? I don't know why you have to. अरे I don't know why you didn't do that. Instead of और वो holding- बताए यूएस में क्या चल रहा है. US में क्या चल रहा है? I don't know. Apparently, Dick Cheney is endorsed Kamala Harris. that's a BDSM name if there ever was one. The Cheneys have endorsed Kamala Harris, and I think the left doesn't like that very much. Bro, Dick Cheney. Dude, he's the guy who was the Bush's vice president. So he was literally उसने the हमने president. फ्रेंड को शूट किया था ना एक बार. अच्छा. जिसकी ऐसी स्टोरी थी. You gotta do it every now and then, man. Some of these guys talk too much. उसके लाइफ में भी कोई इशू होगा. Present company included. Some of these guys talk too much. Listen, if I had a gun, if I was in America, I am sure one of his limbs would have had it from me by now. It's been a year and a half I've known this fucker. तू मानता नहीं है ना वो आराम से बात. एक मैं यार भर बात आराम से बात है तेरे को पता है. एक ना एक इसका गोटा बोलते हैं ना ये क्या बोलते हैं इसको? कटोरा. कटोरा नहीं घुटने का घुटने कटोरा. का हाँ, घुटने की कटोरी. एक ना घुटने इसके मैं हो सकता है मैं मार चुका होता. साले मैंने तेरी घुटने की कटोरी निकाल के मैं जो दाल बना के पका के तेरे मुंह पे मारता. ठीक है. Okay, ठीक है. तू इतना एफर्ट That's लगाएगा. all, yeah, that's more Hannibal, you know, from the TV series where he does all this. You're more intricate. I'm more, just want to. मैं तेरे को धमकी दे रहा हूँ तू साला सिनेमा में घुस रहा है. चुप. You can't tame my mind. ये भी स्केच बना लेना. It's such a it's a broad nexus. It's like the internet disconnected. और तू ही प्ले करिए वो इंडियन हैनिबल. क्या बोलेंगे इसको? पानेबल. Hannibal. पता नहीं. प्रिंस पान का बंदा होगा. पान खाता होगा. Yeah, okay, that's pretty funny. तू सोचना फिर. Because Hannibal, we could do it, but like an Indian version, what would that look like? युवराज. Yuvraj, I didn't even explain the story to me. But you I don't even know if फैनेबल. if you वो know उसका दीवाना है तो नहीं फैनेबल. जैसे ये कह रहा था घुटने की कटोरी निकाल के उसमें दाल बना के पीऊंगा. हाँ, correct. अच्छा, तो ये है इसका फिक्स. Okay. दाल का दीवाना है. बस इसके लिए क्योंकि ये दाल खा हुआ लोगों को बनना पड़ेगा. Okay, ठीक है. Oh, that's a good sketch. That could be a sketch. और तू ही प्ले किया रोल. But what did you think about the proposed date for the sketch release?
Yes, That's a good way to do it. it's a good idea. Yes, And we yes, have yes. enough time and we can do it properly. But हाँ मतलब मैं But we do it properly, yeah. So that's what I'm saying. Yeah. हाँ, We have 3 months. लेकिन 3 महीने लेने नहीं है चल अबे चूतिए 3 महीने लगेंगे करने में, लेने की बात नहीं है. तेरे को लगता है हमको कम टाइम चाहिए? We need more time. Why do you have to make a face every time I say it? You know it's going to happen once a pod. Once every स्टेपल थोड़ी बनाना है कि मैंने रोज चावल खाना है तो मैंने रोज ये क्या है हाँ ठीक है, cool. We like it. We're liking it. It's a good direction. It's a good way to do it. Yeah. It's a good way to do it. But yeah. Anyway, मैं तेरी वो भी देखी सैंटी वाली how's that looking? वो भी सही था Good. By the way, it took us 8 hours to do 45 seconds. Wow 8 p.m. showed up. 4 इनको समझ नहीं आ रहा ना ऐसे Huh? हाँ? क्या? हाँ? What? नहीं, यही वाला जो तूने हाँ. 8 hours. But there was 8 hours of footage also actually. Hmm. We had because there was 2 cameras running wide throughout the night. Yeah. Cool. Is that it? I नहीं don't know if we're done. तू बता क्या चल रहा है लाइफ में तू रिलीज कब कर रहा है वो बताया तूने अभी इसके स्टूडियो में मैंने मतलब गाने सुने हैं, अब ठीक कर रहा हूँ अभी जाके. हाँ. तो अभी लाइक उसी you've been coming here Yes. Good. आ चुका हूँ 3-4 भाई. very nice बस लाइक इंजीनियर से भी मिलते रहता हूँ. हाँ they're good lads हाँ. चल करते हैं, बात करते हैं फिर. nice लास्ट टाइम ब्रो हमने वो अनलॉक सिंस ट्राई किया घर जाके. हाँ काफी पसंद आया उन्हें. good And you've done up your room like he was saying. वो मैं सोच रहा हूँ बूट कैंप के बाद करूँगा. Okay. हाँ तू कब जा रहा है for that 24th nice 24th That'll be where? fun. गोवा. Oh, nice. So, networking How long? thing and 29 तक. Okay, 5 days. Hmm. Good. That'll be a good week. एक दिन फालतू रुक जा. नहीं वो एक प्रोग्राम है so it's gonna be You there going for with the Avril or duration. just नहीं नहीं yourself? अकेले जा रहा हूँ. अकेले. Nice. ठीक है, fair enough. हम्म. Nice. Which part of Goa? आश्रम बीच में रिगेलिया रिजॉर्ट. Okay, वो north. मुझे एग्जैक्टली नहीं पता Ashram is क्या. north. So you go to the new airport then. That'll be nice. गोवा में. There's a new airport. They've got a new airport where the Maharashtra Goa border instead. Actually, the old airport is now not a commercial airport anymore. Or I guess they're phasing it out or something. They made it only for private use. And so the South Bombay airport is done with. Now there's only a North airport. South Bombay South Goa. right the Yes. South Bombay airport South I- Bombay airport. I suppose they took out the South Bombay airport during तूने 2611 वर्स्ट एयरपोर्ट कौन सा देखा अभी तक? मैं तो कोचिन वाला देखा है एक. ब्रो हॉरिबल. Worst airport तो कोचिन भी नहीं है bro. Worst airport पता क्या है? मैंने गबॉन का एयरपोर्ट देखा काफी मुझे तो टट्टी श्रीलंका का एयरपोर्ट काफी टट्टी था. श्रीलंका कब कितने साल पहले गया था? मैं 2022 में गया हूँ. तो अब भी तो सही होना चाहिए यार. टट्टी है bro. आती ही नहीं वैसे अपेरेंटली ज्यादा फ्लाइट्स वहाँ. वहाँ कुछ है नहीं हो. I mean like they don't have any fucking money. I think Gabon is the worst That airport state I've is seen fucked. And even by the way, even in Ireland, there was this domestic airport which was just ass. I mean, it barely was one story. One story. wow There are really small airports there. नहीं काफी इंडिया में भी है. हम I'm रांची गए sure. थे वहाँ पे भी I'm काफी. sure. हाँ. But Sri Lanka to me is the it's the pits least satisfying. if Lahore is the tits Sri Lanka is the pits Sri Lanka is the pits. yeah. We're not gonna have that as the podcast title. no that's okay Okay. Yeah. गबॉन कहाँ पे nobody cares about Sri Lanka it's not clickable West Africa Yeah, because people are raving about Lahore these days. It's The all tits the work. world can या do. वो क्या है वो saying वो जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं. क्या है वो कैसे बोलेंगे पंजाबी में? जिन्हें लाहौर ने देखा जमिया ही नहीं अच्छा ये तूने in fact ये मैंने last episode में बोला है podcast में पाकिस्तानी रोज बोलते हैं. हाँ फक ब्रो इतना जा रहे हैं उधर इतना जा रहे हैं. पाकिस्तानी- वो लाइक मजा ही वही लोग देते हैं यार. पाकिस्तान. मुझे भी लाहौर जाना है यार तो कुछ मेरे को मसालेदार बता पाकिस्तान के बारे में. What are you talking about Lahore? Fucking what's the face? Bloody I don't even know what the fuck I've forgotten. what is your problem exactly पाकिस्तान का बता मेरे को. क्या जानेगा किस चीज पे बात करना है? बैंकक्रप्ट है, टेररिज्म फैला हुआ है. how is it for lawyers there what is the legal this system paradigm whatever looking like कुछ idea ब्रो मतलब वहाँ पे तो जजेस के पीछे पड़ जाते हैं उनको डिसीजन पसंद नहीं है. मैं वही सर हाँ अभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ किया नहीं था उनके सीन. भीड़ चढ़ गई थी. ये सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ उनका? उनके भीड़ चढ़ गई थी. भीड़ मतलब कि fucking it's a stampede or something. हाँ हाँ. I love it. इनका यही ब्रो move होता है। अच्छा मैं तेरे को एक फन बात बताता हूँ. एक कोई पाकिस्तानी बंदा था बाहर मतलब बाहर रहता था. वापस पाकिस्तान में उसने मेरे ख्याल से कराची में एक बुटीक खोला था या पता नहीं मॉल आई गेस
बट हाँ। वहाँ पे वो लाइक 3 बजे खुलता है और 3:30 तक सब लाइक उस वहाँ पे हर चीज लूट के जा चुके हैं, लाइक खाली कर दिया उन्होंने। अरे वहाँ पे- ड्रीम बाजार बाबा, Bazaar, yes. I talked about this last week. Hello, Bro. Dream Bazaar, yes, biggest thrift store in Exactly, Pakistan. like 50 Yes. 50 रुपीस तक में देखो वहाँ पे ड्रेस मिल रही थी, फिर भी लोगों ने किया। 50 Indian rupees, 50 नहीं, पाकिस्तानी रुपीस, हाँ, which is which is nothing. even It's worse. nothing, Yeah. exactly. वही What the- Dream no, Bazaar, no, it's but called this Dream is Bazaar. Yeah, I mean, dude, yeah, it is indicative of a failed fucking society. People can't even failed economy, bro. What the fuck? नहीं, पर पाकिस्तानी उनको खाना वाना भी नहीं मिलता ना उनमें बहुत जज्बा है, जज्बा Yeah. पर उनकी ये हालत इसलिए है क्योंकि भारत और राह साजिश करती है। हाँ। हाँ हाँ हाँ, लाइक हाँ बोलते तो हैं। हाँ हाँ, पाकिस्तानी पंजाबी बहुत सुनाई देता है। पाकिस्तान इंडिया साजिश कर रही है ये कहती है हैं? ये उनका वही ना, इंडिया ने किया सब कुछ भी गलत हो गया, इंडिया ने किया। हुआ क्या है? How did they get here? How do they not have food anymore? What's up with that? Don't they have India ले farming? गया सारा. Isn't it half Punjab? So Bro, they should be able to farm and वो stuff? कहाँ कुछ साल They have पहले, more Punjab than we do. वो कुछ साल पहले तक तो एक्सपोर्ट करते थे मीट वगैरह, अब इंपोर्ट कर रहे हो भी। तो क्या हो गया है? ये ऐसे क्या हुआ है मतलब? ब्रो मिसमैनेजमेंट है बस, Mismanagement so to the extent wow. क्योंकि देख अब वहाँ पे जो भी एड वगैरह मिलता है, वहाँ के जो एलिट्स हैं वहाँ वो पैसा खा लेते हैं और बाहर जाके प्रॉपर्टी वगैरह खरीद लेते हैं। कुछ लाइक कंट्री में इन्वेस्ट होता ही नहीं है, ना ही मेंटेनेंस वगैरह भी कोई सही हो रही है उनके, लाइक रेलवे ट्रैक्स भी फक्ड है, तो वही सीन है। Yeah. अबे वो अबे, क्या it has So a बोलते हैं who's propping up this state these days? The US is not doing it anymore, is it? अब तो यूएस ही कर रही है, मेनली लोन वहीं से मिलेंगे उन्हें। चाइना ने तो बोल दिया China ने कि छोड़ दिया है. चाइना बोल भाई और नहीं देंगे पैसे, अब हो But गया। why is the US? अच्छा चलो ठीक है. अबे क्यों इनका सीपैक कॉरिडोर ये सब भी तो भांगूसड़ा चल रहा था. सब बंद है, क्या हो रहा है सीपैक में? Yeah, Bro, CPAC हक दिया. ब्रो देखो फनी चीज था, पाकिस्तान में एक अटैक हो रहा था, लोग 5 चाइनीज मारना चाहते थे, मेरे ख्याल से बलोच या कौन थे, और एज इट टर्न्स आउट ब्रो चाइनीज ही नहीं थे, जापानीज थे। What is the Japanese doing in Balochistan? पता नहीं, That is nuts. हाँ बट Wait a second. How did अच्छा they get उनके there? भी स्लीपर सेल वहाँ हैं. Wow. Not just us. But I guess it's easy to confuse them. They must have been Chinese. They must have. नहीं जापानीज है। All the Japanese come from there. Huh? Oh, no, man. बोल बोल बोल, सबको सुनाते हैं। We are all one race. Race is a construct. क्या बोलते हैं वो? Political. Vasudhaiv Kutumbakam. हाँ Yeah. The world is one family. Yeah. Okay. So if I'm being racist, I'm being racist towards my own race. Vasudev. So then I'm allowed to do it. True. It's like the blacks saying the N-word. Yes. Why do they do it? Because it's within the same race. So likewise, What is it? I can What is it? say it. What is it? What was the word? Vasu. Vasudev Kutumbakam. Yes, Vasudev, please. ओके Great. Thanks. Do you think it was worth it? That joke where you were waiting so much to. एडिट आउट करना Well, पड़ेगा। You're gonna censor it anyway. I think the audience will let us know that it was worth it, and they were laughing all on the floor. Then they had to even pause the podcast to be able to breathe, catch up to their breathing because they were laughing so hard. Don't want to go to prison High for level this. bro, high level। High level. Don't want to go to prison for this. I don't know. We'll figure it out. एडिट आउट कर दे, just to be on the safe side। Yeah, safe side is all is what we're doing here. Vasudev Kutumbakam. It's called the Safe Side Podcast. Is the Vasudev Kutumbakam? They're so cute. The Brown family. QTB come. Vasudev. But what is the original? The longer phrase is something. What is it? What is the original phrase? Do you know? What is the shorthand? Was Vasudev Kutumbakam is just like the final 2 words. I think the original phrase is longer. You know, like how people say blood is thicker than water and stuff, but So this is just the than water. it's actually So this is just than water instead of the full phrase. Is what you're saying? what the covenant is thicker than the water of the womb or something. The blood of the tomb. Yes. It's thicker than the water। Cool. The blood of the covenant is thicker than the water of the womb is the original saying. The blood of the What a covenant. drag. No wonder they changed it. The blood of the covenant is thicker than the water of the womb, which actually would imply the opposite of blood is thicker than water, right? So I think it's something the same is the case with Vasudev Kutumbakam. It actually does not perhaps mean that, but I think people have just misappropriated the words to imply, oh, the world is one family. So there's nothing to do with coming in bums. So actually, you can be racist. Turns out, it's not. It's not just one race. Wow. Hold on, let me find the original phrase for it. Vasudeva Kutumbakam. Vasudeva Kutumbakam, Sanskrit phrase found in. Sanskrit। Sorry, my bad. Sanskrit. Bro मतलब हद होती है। Sometimes I do code switching and then it just it goes wherever it needs to go.
You know, you can't control it. It's a code. It runs Sanskrit. wild. अभी इससे पहले This भी is why the AI has to be stopped because the code will run wild. Anyway, go on. इससे पहले भी तूने एक वर्ड क्या किया Code था switch. भूल रहा हूँ हाँ जी? इससे पहले भी तूने एक वर्ड के साथ ही किया था Yeah. एंग्लिसाइज प्रोनाउंसिएशन उसका भूल रहा हूँ Americanized, not even anglicized. हाँ I सॉरी guess. अमेरिकनाइज्ड But that's just yeah. In any case, yeah, I do that a fair bit. Anyway, is the Sanskrit fate found in Hindu texts such as the Maha Upanishad, which means the world is one family. But the idea of the phrase, but I need to know what the whole phrase is, buddy. Phrase Vasudev consists. Nagera. Ganana Laghu Chetasam. Ani Ayam Nija Paro Veti Ganana Laghu Chetasam. गाने ना गाने Tu Vasudeva Kutumbakam. That's the original phrase. The original verse appears in chapter 6 of the Maha Upanishad, 6:71 to 73. It is considered the most important value in Indian society. One is a relative, the other stranger. Say the small-minded. The entire world is a family. Live the magnanimous. Be detached. Be magnanimous. Lift up your mind. Enjoy the fruit of Brahmanic freedom. ये तो Instagram caption लग रहा है किसी का. Maha Upanishad. Brahmanic freedom, buddy. So, yeah. Live the life पता नहीं क्या लिखा था. Carpe diem लिखा है इसने भाई. मैं You किसी say- मैं yeah. किसी बंदी के पिक्चर पे देखा था हाँ. कैप्शन पे. So I guess yeah, the Vedas are the original cool cats. Carpe diem, bro. उनके सेल्फीज काफी फायर होंगे. हाँ. रील्स बना रहे हैं ऐसे विष्णु जी सुदर्शन चक्र घुमा रहे They're हैं. not- कॉस्मिक रील्स बनाते थे कॉस्मिक They've read the Upanishads. They've recognized self, and hence हम कहाँ हैं हम कहाँ हैं? कहाँ हैं हम तो शिव बस जी एक- ऐसे स्मोकर रील्स बना रहे होते हैं. हम बस कैमरा में देख के करते हैं. बस वो ब्राह्मण में स्टेयर करके देखते हैं. बड़ी. बड़ी Okay, we've had it with the podcast. बहुत हो गया. है ना? घर जाओ Thanks, Ishwar. पढ़ाई करो. नो प्रॉब्लम ब्रो ईश्वर Hey, thanks for having me. तेरो नहीं चाहिए भाई. एक बात बता, is the stain on your dick permanent, or are you able to wipe it off as I mean, like basically they will inherit it, or even your child will have it, your ईशान के भाई बच्चे का भी होगा, they'll be born with the shit on their dick. नहीं ये स्पेशल फीचर है वो Like feature, अच्छा. हाँ, So but हाँ, you can remove it now. The dick shit. डिटैचेबल But है you remove it, अच्छा, so no, you Yeah. remove the shit and then does it come back on as like a cycle or something? जैसे period होता है ना, हाँ तो हर हाँ, महीने उगता है मून के साइकिल के हिसाब से उगता तुम्हारे है। लंड पे टट्टी आ जाती है. उसको भी शवल करना पड़ता है मेरे को वाओ. तो तुम्हारे लिए हगी वगैरह कुछ बनाया नहीं होगा तुम्हारे गोत्र के लिए? नहीं कोई पैम्पर ही बना दो. मैं कहता हूँ नहीं, वो लीक नहीं होता तो भाई सेफ वे वगैरह ये अलौकिक है Bro, ये पैड मैन इसने अक्षय कुमार ने पिक्चर लड़कियों के लिए कर दी. तुम्हारे लिए कौन करता है भाई? हेलो. कोई कुछ नहीं पूछता ही नहीं ब्रो कोई एडवोकेसी नहीं है भाई. पूछता ही नहीं है हाँ कोई आदमियों की आजकल कोई वो करेंसी नहीं रही. हाँ औकात ही नहीं रही खत्म Let हो it, गई. खत्म। let it be noticed कि सबसे ज्यादा हम ही ने पूछा है. क्या So, करा क्या पूछ रही हो कुछ करा क्या उसके बाद चलो at least something you got to start the conversation. yeah. As they say, you got to enter the conversation, the public conversation. हाँ इवेंचुअली Yeah, इवेंचुअली We can have many conversations about this. Don't worry. Virtual नहीं or- एक getting enough है, shit on your खत्म dick. करते हैं Well, I guess some people do it. They're having a good time, and she requests a special something, and you get shit on your dick. हाँ But then it's not permanent. It's not hereditary. But I guess you have a gotra for it. It is passed on. जेनेटिक मॉडिफिकेशन Through your gotra to your potra. हाई लेवल And that's the way to end the episode. Bye.